माशाल्लाह अंकल जी, आज तुम ब्रिटिश सिटीजन हो गए हो तो कैसा महसूस कर रहे हो? महसूस इस तरह कर रहे हैं कि 40 साल तू यूरोप धक्के खाधे ते इटली की ली है नैशनैलिटी जबरदस्त। ते हुण इत्थे आए हैं तो मैं कि इत्थे दी भी लै लईए, क्योंकि हुण तो जेड़े पासे जासा ना नैशनैलिटियां लैंदे ही जासा। कितनी हो गई नैशनैलिटियां? 3 तो हो गई हैं, पाकिस्तानी, पाकिस्तानी, इटालियन और ब्रिटिश। तो केड़े मुल्क च रहे हो? जिंदगी का सफर किस तरह दस दो अपना जिंदगी का सफर पाकिस्तान इस तरह गुजरिया जी कि मैं जेलम तो पैदल टुरिया जबरदस्त। ते फ्रांस तक कोई ट्रेन कोई जहाज नहीं देखे। ये केड़े सन दी गल है? ये सन 90 की गल है। जबरदस्त माशाल्लाह, समझ गए हो? अच्छा अच्छा। ते फ्रांस जाके सियासी पनाह कराई, हाँ हाँ 7-8 साल रहा। फिर 1996 इटली की इमीग्रेशन खुली, हाँ हाँ वो पेपर ले पाकिस्तान गया 17 साल बाद। हाँ हाँ छोटा बेटा फिदा हुसैन सी, उसनों मैं दस के आया सा कि बेटा मैं चलिया तेरे दी जूस लैंड। अच्छा वो 2.5 साल का सी, अच्छा अच्छा रोंदा सी। अच्छा अच्छा। जिले 17 साल बाद गया तो आदा अब्बा जी किधर चले गए सो? मैं आ गया पुत्र चले गए सा कि सेबां दे अंबां दे बूटे लाए, हाँ हाँ वो तैयार होए तो फल जूस कढ़ाया तो यह पेटियां जूसां दी आंदियां तेरे ते, क्योंकि मैं 5-6 पेटियां जूस दियां लैके गया सा। ते जूस लैन गए सा तो हुण आ गया बेटा। हाँ हाँ ते बस इस तरह का जी। फिर फैमिली सारी नूं इटली बुलाया, माशाल्लाह वड्डी फैमिली सी। जबरदस्त माशाल्लाह। बस जिंदगी च नसीबो फराज फिर बंदा बस ये नसीब फराज तो रहते हैं, लेकिन अल्लाह ने इतना की करम किया मेरे ते जी कि मैं दस नहीं सकता कि मैं बहुत ज़्यादा हूँ 20-15 साल तो बीमार से। हाँ हाँ अज मैं दोबारा फिर अल्लाह के फजल करम नाल खुंडी सट दी है, यंग हो गए माशाल्लाह, यंग हो गया और कौड़ी खेलने के दिन। जबर। तो और दसो जर्मन भी रहे हो? जी जर्मन तो पहला स्टार्टिंग रही जर्मन। अच्छा जर्मन भूल गए। जर्मन केड़े? जर्मन रहा, फ्रांस रहा, हालैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, स्पेन, सिर्फ नहीं तो पुर्तगाल नाल नहीं, यूनान। यूके कितने साल हो गए थे? यूके आए हैं जी तकरीबन 7 साल हो गए। तो की तुसीं महसूस करते हो यूके विच ते इटली विच? यूके दी क्या बहारां न, लेकिन मौसम ठीक हो गए थे। अच्छा अच्छा। बाकी तो बड़े आज तो बड़ा वधिया मौसम है, तुसां अज रह चुके हैं। अज मौसम दे विच मेरी हुई है, सेरेमनी हुई है तुहाडी सेरेमनी हुई है बड़ी, और मौसम भी अच्छा सी ते माशाल्लाह 50-60 आदमी सन। हाँ हाँ नहीं जबरदस्त सी, वो बड़ा अच्छी हो गई है। अच्छा जो है फोटो शोटो तुहाडी बनाईयां फोटो भी बनाए ने। ये भी एक होंदा है, चलो हुण तुहानूं पूरे राइट्स इस मुल्क जिथे रहना होवे बंदे ने, अगर तुहानूं ऑप्शन है तो जरूर नैशनैलिटी लेनी चाहिए। की तुहाडा ख्याल? मैं मतलब फिदा दी अम्मी दी भी अप्लाई कर दी है इसे तो। जबरदस्त। मैं क्या कि ये कितना टाइम लग्या तुहानूं अप्लाई करन तो बाद? मैनू तो जी टोटल 2.5 महीने अज अप्लाई करन तो लैके ते मिल अज गई। तो इटली में जिस तरह नैशनैलिटी अप्लाई की सी, अप्लाई करन तो बाद कितनी देर बाद मिली सी? उस साल पहला तो 10 साल उन्होंने रेजिडेंस? रेजिडेंस हुआ एक जगह का। हाँ एक अच्छा वो हो रहा, फिर 6 साल लग गए सन मैनू नैशनैलिटी मिलती। अप्लाई करन तो बाद 6 साल बाद तुहानूं मिली सी? जी हाँ। तो इत्थे उसी 2.5 महीने बाद तुहानूं मिल गई? इतने मैनू 2.5 महीने बाद मिल गई। ये तो जबरदस्त हो गया। बातां ने इसलिए हाँ नहीं नहीं इस वास्ते की कहो ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਸਾਂ ਕਿ ਬੇਟਾ ਜਿੱਥੇ ਰਹੋ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਫੀਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹੋ, ਬਿਹਤਰੀਨ, ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣੇ ਸਹਿਣ ਤੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਣਗੇ, ਰਸ਼ ਕਰਨ ਕਿ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ। ਆ ਧੋਖਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਨ ਜੇ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਰਸੂਲ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚਲੋ। ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ ਜੀ? ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਨੀयत ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਚੱਲਸੋ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਔਰ ਵਾਲदैन ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲदैन ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਦਮਤ ਕਰੋ। ਔਰ ਦਿਨ ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਜ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਜੇਲੋਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਤੱਕ ਆਇਆ। ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾ ਭੁੱਲਣ। ਜੋ ਅੱਜ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਇੱਥੇ ਉਹ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 4 ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ। 40 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ
ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਦੋਸਤ ਯਾਰ ਮਿਲਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੂੰ ਯੂਰਪ 'ਚੋਂ ਆਏ, ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤੂੰ ਹੈ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਰਹਿੰਦਾ ਯੂਰਪ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ, ਰਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਤੇ ਆਏ ਹੋ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਕਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਈ ਨਸੀਬੋ ਫਰਾਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਬ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਬਰ ਕਰੋ ਤੇ ਸਬਰ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰੋ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਸੀ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਗੀਆਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਆਵੇਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਜਾਣ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਭਾਵੇਂ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਸਹੀ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਓਕੇ ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼। ਓਕੇ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼। Good morning, everybody. My name is I'm a Deputy Superintendent Registrar here at Nottingham City Council, and I'm joined today by my colleague Janet Hilton, who will be assisting the Lord Mayor with the presentation of your certificates today. On behalf of the Government of His Majesty King Charles III and Nottingham City Council, it gives me great pleasure to welcome you to your citizenship ceremony in the beautiful surroundings of the Council House. Today is the final step in the process of becoming British citizens, and your ceremony today formally welcomes you to the British nation, the British community, and into full membership of the British family. It is a mark of the importance of this occasion that your certificates are to be presented to you today by the Lord Mayor of Nottingham. I'm now going to invite Councillor Ladysmith to say a few words to welcome you. Thank you. Good morning, ladies and gentlemen. As the Lord Mayor of Nottingham, I'm delighted to welcome you to the Council House as you become British citizens. Our city is one of the most important, attractive and best known cities in Britain. People of many different faiths, cultures and ethnic groups enhance Nottingham and make it a wonderful place in which to live and work. Becoming a British citizen brings with it some very important rights and responsibilities. Respecting law and order, democracy, freedom of speech and the beliefs of others. These values enhance our society and allow everyone to reach their full potential. Finally, ladies and gentlemen, please accept my personal congratulations as you become British citizens. This is a very special day for you, and I'm very pleased to be part of it. Thank you. As part of your ceremony today, ladies and gentlemen, I'm going to ask each of you to make a promise and an oath to the Sovereign that you will be a faithful citizen. I'm also going to ask you to make a formal and public pledge that you will be loyal subjects and observe the laws of this country. Could I ask the two groups of ladies and gentlemen who are sitting in front of me to please stand? So firstly, what I'm going to ask you to do is for everybody together to say I and then your name. This forms the first part of an affirmation of allegiance or a promise of loyalty. So if I was standing with you, I would say I, Amanda Valenti. So if I can ask you to do that first of all, please. Thank you. Could you now please repeat as a group the following affirmation? Do solemnly, sincerely and truly, declare and affirm that on becoming a British citizen, I will be faithful and bear true allegiance to His Majesty King Charles III
to welcome you to British citizenship. I'm now going to ask each of you to step forward to receive your certificate of naturalisation from the Lord Mayor of Nottingham. When your name is called, if you have friends or family members with you who wish to take a picture or wish to join you in having your picture taken, then please feel free to come forward. So, our first certificate this morning is to be presented to Hifsa Amir. Congratulations. If you'd like me to take a picture, please bring your phone with you when you come up, and I'll be able to do that for you. Congratulations to mansha. Congratulations to mansha. Congratulations to Hussain Mansha. Congratulations. You each made an oath and a pledge that you will be faithful subjects to the sovereign and true and loyal citizens of the United Kingdom. May your lives be enriched, and may you in turn enrich the lives of others. Could everyone please stand now? Listen to the national anthem. Thank you. Ladies and gentlemen, can I ask you please to join me in thanking the Lord Mayor of Nottingham for giving her time so generously. Thank you. Thank you, Would you please congratulate your fellow British citizens? So now that you have your certificates, ladies and gentlemen, you can apply for British passports whenever you want to do that. Inside the white folders that we've given you, there is some information about how you can apply for passports. We would ask you that if you have any questions or concerns about that process, please contact His Majesty's Passport Office. They are really the only reliable source of information, reliable family